हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जिनको 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। 20+ इफ आई से लाइक 22-23 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। एंड लास्ट 20 साल से वो टीसीएस में काम कर रहे हैं। एंड ही इज अ वेटरन इन टीसीएस। ही हैज स्पेंट वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन टीसीएस। सो इस वीडियो में हम उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो इसलिए हम वीडियो में उनका नाम मिस्टर एक्स करके उनको बुलाएंगे। तो हेलो मिस्टर एक्स, क्या अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? लाइक आपने अपना कैरियर कब शुरू किया था? लाइक कौन सी टेक स्टैक में काम करते थे? एंड व्हेन यू लेफ्ट टीसीएस व्हाट वाज योर डेजिग्नेशन? Yeah, sure, sure. So, hi everyone. So basically, मैं 2000 पास आउट हूँ एंड 2000 से मैंने इनिशियली मैंने एक अदर कंपनी में ज्वाइन किया. इवन आई हैव सेलेक्टेड इन अ कैंपस इंटरव्यू ऑफ टीसीएस, हम्म। बट आई हैव वर्क फॉर अ डिफरेंट कंपनी. ओके, as they are giving the better salary. Okay. ओके। सो मेरे कैंपस इंटरव्यू में मुझे टीसीएस में सिलेक्शन हुआ था, बट थिंग्स वाज नॉट वेरी वेल बिकॉज इट्स अ गुड रेपुटेड कॉलेज एंड हम्म। लॉट ऑफ अदर बिग ब्रांड इज कमिंग, सो मैं कहीं और ज्वाइन कर लिया. And then after some time, right, I decided to come back to TCS. It's just कि मेरी शादी होने वाली थी, तो I was thinking कि let's have some stable job, right? So I applied for it, and a first call I got it, right? So that's why I entered in TCS, and ओके। then we started from there in the on-site, and I was there in on-site for a longer time, more than 10 years. ओह ग्रेट। Okay, with a multiple role. I have played the role of technical manager, then technical program manager, then technical delivery manager, technical engagement manager, PRM role also. Uh, in from last 2 year, I am in India. Hmm. I came back because of some they have problem on processing my green card, so I need to came back. uh, it's not from the USCIS side, but it is what TCS have some unique rule. Okay. ओके। So that impacted. Okay, that's also one of the good story. And then I came back to uh, India, and from that time I'm in India. So that's what my story. And from last 2.5 year, I'm in India. तो किस टेक्नोलॉजी में लाइक आप काम कर रहे थे? So from last 2 year, when last 2 year back when I came back to India, so I was working in a data science. Mostly, I was leading more than 300 people in the data science ओके। globally. Okay, and then slowly I also moved on AI based solution. So it's mostly an horizontal, but yeah, it is what it is. That's what. ओके। सो रिसेंटली लाइक बहुत सारे लोग ले ऑफ हो रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है फॉर सर्टेन रीजंस, एंड दे हैव केम अप विद समथिंग कॉल्ड फ्लूइडिटी लिस्ट। सो एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कि ये फ्लूइडिटी लिस्ट है क्या? लाइक ये सिस्टम कैसे काम करता है टीसीएस के अंदर? इसका पर्पस क्या है? लाइक पीपल हु आर इन फ्लूइडिटी लिस्ट, आर दे बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस बेस्ड और स्किल बेस्ड, और प्रोजेक्ट डिमांड नहीं है? Like, we just want to get an insight like what exactly this fluidity list is and how it works. It would be better because you have been in the TCS with such a long time, and you will be the best person to give us an insight on that. If you could please. Sure, sure. So basically, what happened, right? Purity list is something like which has been, I will tell you first what happened. Okay. Mm-hmm. So basically, TCS is always working on a fixed price kind of thing. Huh? Okay. And this is a legacy of TCS. Very simple. I mean, you can say like maybe 10%, approximately. I was taking a hypothetical figure, right? So 10% is a TNM, rest all 90% is fixed bit. Fixed bit is like a, we said the client, okay, you give me this much of money yearly, you like a $5 million for 5 years. Every Mm-hmm. year we will spend $1 million. So clients say, okay, we will spend $1 million, but it depends upon if we have given a work. So it may be 1 million, it may be like less than that. Okay, but it should not exceed more than 1 million. This is fixed. Now TCS take the responsibility of account to how they will deliver it, right? Mm-hmm. That's what the whole fundamental is.
So it's not a TN. And TCS USP is this. Okay, because of this reason, it's able to sell very cheaper to the customer from their Mm-hmm. competitor. Okay. The other way is that getting one leg inside the customer place and then slowly put your body fully there, right? Because when you start with a lesser price, then people will analyze the stuff, and then once you are inside, then you expand yourself. That's a legacy style of TCS doing. Mm-hmm. Previous historical pandemic when it hit it, right? Everyone was working from home. Okay, and during that period, when the pandemic was over, right? That time what Mm-hmm. happened, like jitne bande the, they asked to come back to office, right? Huh? Uh-huh. That's what happened. And during the same scenario, parallelly they were hiring people from market, right? And Mm-hmm. that time the resource cost was very high in the market. So Yeah. but to fulfill the resource, right, they need to hire the high cost resource. So basically what happened, आप बिल कर रहे हो $20 के, लेकिन आप हायर कर रहे हो $30 का बंदा. You understood, right? You are paying higher amount to them because Yeah. Yeah. what happened basically, they have a GPM, gross profit margin, and other stuff also added to the account. So if you accumulate that, you will see like you are overpaying it. ठीक है, मान लो $20 आप चार्ज कर रहे हो कस्टमर को, और उसमें आप $5 आप रिसोर्स को देते हो, $15 आप अपने पास रखते हो एज अ क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. नाउ अब जो आप बंदा ले रहे हो वो $5 का नहीं, वो $9 की आ रही है. यू अंडरस्टूड, पर आवर के हिसाब से. सो ये हो गई एक कॉम्प्लिसिटी कि भैया आप ओवर पे कर. So what happened? Because they need to compete with a customer, okay, they and you need to compete with their, uh, what is that? Like a CTS and other Yeah. competitor, Competitor right? companies. So competitor, correct. So they need to basically be in the market, right? So they have hired a lot of people. And in the same time, Rajesh Gopinathan, he Mm-hmm. resigned and he went, right? That Mm-hmm. happened. So basically, when Rajesh Gopinathan went outside of TCS, right? So they were looking for whom, and this Kriti came, right? Rajesh Gopinathan was having a growth minds, right? Kriti Mm-hmm. was mostly coming from a ICU head background, right? So he was more on cost optimization, right? So he doesn't have a very good growth mindset. Right? That's what I feel. Again, this is my own opinion, but Mm-hmm. I interacted with multiple leadership, so I understood that part, right? So what happened, right? They in the past 4 5 year, right? They were Mm-hmm. not able to grow properly. Okay, so once I don't know why after Ratan Tata went, this all things started, but it is what, right? So we have seen it is started in a very speed way that they are looking on the margins, and they figure out that what is happening. Okay, the margins are not growing because business are not growing. So business are not generating the more money. Okay, but we are hiring a higher cost resource to putting on our fixed bill, right? So Yeah. our margin is getting hit. Okay. So because of that, they decided to reduce some level of people. Okay. And some like if they are thinking like, okay, let's have reduce like a 10 15% based on that, we'll Mm-hmm. able to meet the break even, and from there we will start it. That's a very simple way every company do, and they decided it because they are seeing like they're not able to grow, so they want to cut their pocket. But fidelity list is something very tricky, which you actually pointed. Mm-hmm. So fidelity list, it's multiple things they have looked. The first thing they have looked on when they recall the people from a work from home to work from office. Okay, uh, who are who are not coming. Okay, they are Mm-hmm. monitoring that hours. They are monitoring everything. They in the corporate side. So I say like in TCS, corporate is working in a one way and delivery is working in a one. Because of work from home culture, delivery expectation has been increased, right? Because people were working for 14 15 hours, they're working from home, right? Yeah. So expectation was same for a customer. So Mm-hmm. project side pressure was also same like you do it, right? Mm-hmm. And that got mismatched. Okay, definitely this will mismatch, no? Because you need Right. to go Right. to office, you need to travel, come back, Traffic. right? Yeah. So
So people are either listening to, should go and listen to their manager or go and listen to the corporate. So there is a big mismatch happen during this period. Hmm. I think either this has given an advantage to a core, senior management to first pull those lists, or maybe HR to those lists, because you're not sure like why they have pulled these people. They are, I tell you, I have seen the fidelity, Mm-hmm. the team I was handling. Okay, in that team, they come us to with some list of name from the HR side. Okay, and they say Mm-hmm. like we are putting them in a fidelity list. Account Okay. has not decided that. Okay, account has given the list from a HR side. Okay, saying like Okay. these people are working from home, or they are some XYZ reason. They have not Mm-hmm. declared that. I- Uh, so these are the list. You tell me like whom you want to throw it out. Maybe Okay. they have given a 60 people list. Okay, they asked 40, you need to give a name. Now, Okay. based on that, basically we need to decide. But I tell you, this was, whoever done the exercise is not good, because most of the people in my team are the best Mm-hmm. performer. They are all A rater. Hmm? They Okay. are all A or B rater. They are not like I don't have anything saying like they don't have a they have a performance issue. No, there is no performance issue. There are few, one or two is there which is basically lacking with performance because of some XZ reason. Their PIPs are going. PIPs is a Mm. performance evaluation plan. So if Okay. I need to give a 40 name, two or three are there like that. Most of the Mm-hmm. people, in my observation, when I get the list, I was surprised. And it seems like either they are eligible for a promotion or Oh. they are eligible for an on-site. Means they are a Mm-hmm. good performer and they are eligible for something. And TCS don't want this middle management people to grow. Okay, Okay. they want to wipe this middle management, which are actually eligible for a next step or next level. Because see, very simple, right? I know the people who are sitting in a bench. I think Mm-hmm. right now still they're in a bench. Okay, from 6, 7, 8, 10 months. Okay, and Okay. leader people also, like senior people also. They have not touched. Very less people are touched in a bench. Okay, the people have been asked to release from a project. Okay, Mm-hmm. Mm-hmm. and then throw them out. Okay, you have seen that, right? The Yeah. Yeah. multiple people also said like they bring me from the project and they throw out, right? Mm. Because they are middle management, they have aspirations, they have a good performance things, right? They know like they will grow, right? That is one thing, right? And they don't want, the upper management don't want us to go up, right? That's one thing. And the second part is middle management. There are people, right, who are sitting in a bench, right? Okay, those people are still sitting in a bench from the Okay. 7, 8 months. So, Okay, so so, so it is like it's they are all just, complex. yeah. So it is like they are, we can't say like they are firing the people who are up for the promotion or eligible for the on-site, correct? And there are many people who are in the bench and they were like having good number of experience, but still in the bench from last 6, 7 months. But those are not getting fired. But people who are up for the promotion are getting fired. In a way, we can Yeah, say that. this is what my eyes and my understanding for my team. Okay, I Okay. was handling more than 400 people, so because I don't want a single people to go out, even it's a less performer or a high performer, right? I want Mhm. everyone to play their better role, right? But we don't created the list. We got the list from HR and asked to select from those, okay, and give it. And if you are not selecting anyone, then give the Mhm. replacement. Okay. Okay. And a replacement also, they are not adapting if they are like think of if they are not in a middle management, right? If they are a Mhm. fresher or something, you are giving a name, right? Or you are giving a name for senior people, right? Which are leadership role, right? So they are not accepting that. Okay. So, but they are accepting only the middle level management, right? Mhm. So middle level management is a key players. Either they are Correct. Correct. architect or good managers, right? So. So one more question, like इस तरह की exercise या initiatives TCS पहले भी लेता था, like this time it is in the news because it has laid off so many people. So in past also, like before this fluidity list, like 3 साल 4 साल पहले इस तरह के actions TCS भी पहले दिया करता था क्या?
ऐसे फायरिंग टू जस्ट रिड्यूस द कॉस्ट एंड काइंड ऑफ अ थिंग? नहीं देखो, एक्चुअली क्या है ना, ये इस तरह की मैंने चीजें आती थी, बट ये अकाउंट लेवल पे आती थी। ठीक है। ओके। जैसे हमारे अकाउंट लेवल पे ही आया कि इस 4 बंदे हैं, दे आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन, 3 साल से प्रमोशन नहीं हुआ या ऑन साइट नहीं गए, राइट। हाँ। तो हम क्या करते थे, हम फायरिंग मोड तो होती नहीं थी। ओके। देयरफॉर वी हैव अ वेरी स्ट्रांग जॉब सिक्योरिटी। हाँ। बट मैं तो खैर रिटायरमेंट ले लिया, वो बात अलग है, बिकॉज आई हैव समथिंग, बट आई टेल यू लाइक सिचुएशन वहाँ पे ऐसा था ना कि हम उनके लिए कोई प्लेस देखते थे। मान लो कि मैं रिटेल वर्टिकल में हूँ, राइट। तो हमने रिटेल में मैं एक अकाउंट को देख रहा हूँ, राइट। तो हम लीडरशिप को जाके बोलते थे कि देखो यार, ये बंदे अच्छे हैं, राइट, ये बंदे ऐसे कर सकते हैं, इनकी कैपेबिलिटी ये है, इनकी डोमेन नॉलेज ये है, ठीक है, तुम कुछ देखो। एंड आई टेल यू, करेंटली लीडरशिप एम डिफरेंट है, और उस समय लीडरशिप डिफरेंट थी, इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, नॉट द लीडरशिप नेम और समथिंग। से बंदे सेम ही है, बट ओके। उनके एटीट्यूड चेंज हो गए बिकॉज ऑफ अपर मैनेजमेंट से मे बी सम काइंड ऑफ प्रेशर इज कमिंग, राइट। तो उस समय वो लोग उनके लिए ऑन साइट देखते थे, और ऐसा जगह दिखते थे जहाँ पे उसको और मोस्टली यूटिलाइज करके प्रमोट कर सकें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अपने प्रोजेक्ट में बजट नहीं है तो हम उनको प्रमोट नहीं कर सकते, तो हम उनको पुश कर देते थे अदर अकाउंट में, अपने ही डोमेन पे, कि आप देख लो भैया, और वहाँ पे है बजट, तो वो लोग, ये कुछ नया अकाउंट आया, राइट, दे हैव अ बिग बजट, तो उसको प्रमोट करते। बट इस तरह का चीज पहले हुआ नहीं। ओके। ठीक है। तो लाइक जैसे आपने बताया कि आपकी टीम से भी काफी लोगों को निकाला गया था, तो जो लोग निकले लाइक उनको कुछ रीस्किलिंग या कुछ सेवरेंस बोनस या कुछ किसी तरह की कुछ हेल्प मिली थी टीसीएस की तरफ से, लाइक अगर वो कहीं और जा रहे हैं या कुछ कुछ भी ऐसा हेल्प वगैरह कुछ मिला था उन लोगों को? तो पहले मैं रीस्किलिंग पे आता हूँ। हाँ। ठीक है। रीस्किलिंग का तो टाइम उनको दिया ही नहीं गया। ठीक है। अच्छा। हमें लिस्ट आया, हमने उन्हें इंटीमेट किया। ठीक है। हम्म। हमें कहा जाता था कि एचआर से कनेक्ट करने के लिए बोलिए, हम बस उनको रिलीज करते थे, बोलते थे कि आप एचआर से कनेक्ट हो। हम्म। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल को 1 वीक के अंदर थ्रो आउट कर दिया गया। ठीक है। अच्छा। कंपनसेशन वाइज मैं कह नहीं सकता कि किसको क्या मिला है, बट जैसे मुझे न्यूज़ मिलते हैं कि वो वेरिएशंस तो हैं। ठीक है। ओके। अब किस लेवल पे क्या वेरिएशंस हैं एज अ सर्टेन पैकेज, राइट, सो वो एक अलग चीज है कि दैट हम्म। इज डिफरेंट फैक्टर टू, बट उसमें मेरा कोई ये नहीं है, मैंने अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट हाँ, हम्म। इतना पता है सबको अलग अलग मिला है, ओके। सो कोई स्टैंडर्ड नहीं। हाँ, दे सो माइट व्हाट? हैव अ स्टैंडर्ड, बट आई डोंट नो। तो लाइक इसके बाद लाइक हाउ वाज द मोरल ऑफ द टीम? लाइक जो लोग निकल गए और जो बचे, जो वेरी लोग। बैड, वेरी बैड, दैट्स द वे आई केम आउट फ्रॉम अ टीसीएस। मैंने रिटायर, बिकॉज सी यार, देखो सिंपल है, राइट, 300 बंदे, 400 बंदे मेरी टीम में हैं। ठीक है। बट हाँ। यू कैन से लाइक अ टेक लीड्स, टेक प्लेयर्स आपके 40-50 होते हैं, राइट। हाँ। एंड मोस्टली क्या होता है कि आप 40-50 प्लेयर्स को लेके आप चलते हो, और वो नीचे देखते हैं। ठीक है। इट्स लाइक you become a king, they are like a fighter's head, and then down you have a fighters, right, that's the way it राइट। goes, right. नाउ आपका जो फाइटर हेड है, उसमें आप 40 बंदे को हटा देते हो, बोलते हो 2 बंदे को, कि 2 बंदे तुम 400 बंदे को संभालो, और वो जाके मुझे कंप्लेन करना चालू कर देंगे कि सर ये वो नहीं कर रहा है, वो उनकी भी तो लोड बढ़ गई ना। तो राइट। अल्टीमेटली इट विल ऑल्सो कम टू माई कर्व फिटिंग, राइट, कि भैया अगर तुम ही डिलीवर नहीं कर पाओगे कस्टमर को, तुम्हारा एस्केलेशन आएगा तो तुम्हारा भी सी बैंड हो जाएगा, राइट। तो ये तो हो नहीं है, राइट। सो इट्स बेसिकली इट्स ऑल, एंड देन प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस लॉट, राइट। मेरी ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जूनियर रिसोर्स आल्सो स्टार्टेड कॉलिंग मी, बिकॉज जब पीपल, वो 40 की रिसोर्स जब मेरे बंदे निकल गए, राइट, without any information, right, तो people are calling me day and night, right। वो अगर टेक लीड को कॉल कर, टेक लीड बोल देते हैं, यार मैं, मेरा ऑलरेडी प्रेशर, तुम इससे बात करो। ठीक है। ठीक है। सो दैट व्हाट स्टार्टेड। हम्म। तो जैसे आपकी टीम में कुछ लोग फायर हुए और जो कुछ लोग बच गए, लाइक वर दे ऑल स्केर्ड कि कहीं मेरा नाम ना हो अगला? लाइक वर दे आस्किंग यू कि मेरा नाम तो नहीं है फ्लूइडिटी लिस्ट में, कि मुझे तो फायर नहीं किया जाएगा? लाइक ऐसा कुछ रिएक्शन था उन लोगों का? नहीं, वो उनको सभी को पता था कि ये इनिशिएटिव टीम लेवल से तो हो नहीं रही। ओके। ओके। मोस्ट ऑफ द पीपल नो, मीन्स एक्चुअली क्या हुआ ना, एक इनिशियली एक डर था, बट शुरू में लोगों
को लग रहा था कि हमारे टीम लेवल से ही हो रही है, but बाद में फिर मोस्ट ऑफ द लोग समझ गए कि इट इज, कहाँ से समझे मुझे पता नहीं, बट दे स्टॉप टॉकिंग ऑन, बट या morals are very down. सो People are started looking outside, right? सो लाइक इंडस्ट्री में नैरेटिव है कि ये फायरिंग जो है वो एआई या ऑटोमेशन की वजह से हुआ है। तो ऐसा कुछ है कि लाइक इज इट बिकॉज ऑफ एआई और ऑटोमेशन और इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द बजट कटिंग नहीं, इन द। टीसीएस की फायरिंग तो वो स्क्वायर, सॉरी ट्रायंगुलर, अपना स्ट्रक्चर तो ट्रायंगुलर नहीं है ना, स्क्वायर है, राइट? ओके। तो कॉस्ट अभी वो फायर किए हैं, फिर वो 1-1.5 साल फिर ये इनिशिएटिव लेंगे, बिकॉज जब तक आप ऊपर के लेवल को ट्रायंगुलर मैंने नहीं करोगे, राइट, ये होते हाँ। रहेगा। You need to see, basically the right way to do is in all layer, right? You fit the percentage curve, right? कि इस करेक्ट। लेयर से हम इस परसेंटेज के लोग को फायर करेंगे, राइट? मान हम्म। लो कि आपका एक्स लेवल पे 20% है, देन वाई पे आपका, मैं बोलता हूँ हायर लेवल पे 20% है रिसोर्स, राइट? एंड हम्म। देन आपका मिड लेवल पे आपका 40% है, देन लोअर लेवल पे आपका ये, ठीक है, मिड लेवल पे ज्यादा है, वी नीड टू डू दैट, बट अगेन यू आल्सो थिंक ऑफ द अपर लेवल, राइट? ओके, हम्म। एंड यू आल्सो थिंक ऑफ अ ग्राउंड लेवल। तो आपको एक रेशियो निकालना पड़ेगा, आप सिर्फ मिड लेवल को वाइप अप कर जाओगे, राइट? तो हम्म। आपको लगता है अभी तो डर के ऊपर वाले काम कर रहे हैं, ठीक है, बट राइट। उनकी प्रैक्टिस तो वही है, उनको तो हेड बनना है, राइट? राइट। राइट। तो वो तो हेड ही बनेंगे, वो तो कभी आपका डिलीवरी हेड या कुछ ऐसा तो प्रोग्राम मैनेजर तो बनेंगे नहीं, करेक्ट। करेक्ट? और नीचे वाले से जो ऊपर जाएंगे वो तो अभी मुझे लगता है मोस्टली मिड लेवल में जो है वो तो डर के और बाहर खोजना चालू कर दिए हैं, राइट? हम्म। So it is not going to help you. You need to do a percentage. Means rationalization should be in a defined way rather than कि हाँ ये बंदे को हटा दो, बीच वाले को, ये लोग जो है कोई काम के नहीं है, वो ऐसा नहीं होता। और उस पर से आपने बिना काम के बंदे को तो हटाया नहीं, आपने प्रोजेक्ट रिलीज कर करके बंदे को हटाया। करेक्ट। करेक्ट। अगर दैट वाज बिना अ काम के बंदे तो बेंच वाले थे या ठीक दैट है, वाज अ तो शॉकिंग। बेंच वाले को तो, हाँ बेंच वाले को तो आपने हिट ही नहीं किया। ओके। मैं सो आपको बता रहा हूँ, मैं काफी लोग को जानता हूँ मिड लेवल मैनेजमेंट में ही, जो 10 साल से बेंच, 10 महीने से बेंच पे हैं और अभी भी बेंच पे मतलब ये पूरा लाइक सम पॉलिटिक्स और समथिंग इज, आपको क्या लगता है कुछ हैं। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स नहीं है, ये हाँ। एक बहुत कॉमन तरीका है आईटी इंडस्ट्री में कि हाँ। ऑलवेज मिड लेवल मैनेजमेंट टारगेट होते हैं, क्योंकि हाँ। देखो अपर लेवल मैनेजमेंट को ये डायरेक्शन दिया जाता है कि हमें कॉस्ट को ऑप्टिमाइज, अब आपको अगर आप अगर अपर मैनेजमेंट में आपको डायरेक्शन है तो आप पहले अपने को बचाओगे, करेक्ट। करेक्ट। हाँ। ठीक है? तो जब आप अपने को बचा रहे हो तो फिर सेकंड होता है अपने लॉबी को बचाओगे, राइट। राइट? क्योंकि लॉबी क्या होता है कि लॉबी एक दूसरे को हेल्प करता है हर जगह, राइट? मोस्ट ऑफ द राइट। लॉबी हेल्प करता है। लीडरशिप रोल पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द रोल्स आर एसोसिएटेड टू ईच अदर। आप मेरे लिए एक्सेल सीट बना रहे हो, आप मेरे लिए पीपीटी बना रहे हो, सब डिपेंडेंसी काफी रहती है। और मोस्टली यार एक बंदा रहता है जो लीडरशिप को प्रेजेंट करता है या कस्टमर को प्रेजेंट करता है, एस्केलेशन हैंडलिंग करता है, एक बंदा रहता है जो पीएमओ का काम करता है। तो एवरीवन इज कनेक्टेड, वेरी इजी टू रिमूव पीपल हु आर टेक्निकल, राइट? जो नॉन कनेक्टेड है, जिसको आप आराम से रिप्लेस किया जा सकता करेक्ट। है, राइट? सो वो ये इंडस्ट्री का रूल है कि मैंने अपना जो सर्विस इंडस्ट्री है ना उसका ये रूल है, इट्स आईटी और इट्स रेस्टोरेंट बेस्ड सर्विस इंडस्ट्री, सेम चीज है। नाउ कमिंग बैक टू अपस्किलिंग तो किया नहीं मैंने, वो क्लियर कर दिया, राइट? हाँ। कमिंग बैक टू एआई, राइट, वो मैं एक बोल रहा हूँ कि इट्स अ बबल। ओके। मैं 2 साल एआई पे ही था, and I tell you, like, still the people are not able to think what is AI. In my understanding, AI में जितने भी ट्रेनिंग्स दिए गए हैं टीसीएस में और जितने भी चीज किए गए हैं, पाइथन मीन्स एआई, दैट व्हाट दे अंडरस्टैंड। ओके। सो उससे अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं है। सो अभी हम लोग पूरी इंडस्ट्री जो है, अपार्ट फ्रॉम अ प्रोडक्ट इंडस्ट्री, बिकॉज प्रोडक्ट इंडस्ट्री स्टिल वर्किंग ऑन लॉट, सर्विस इंडस्ट्री के लिए क्या एआई, व्हाई यू नीड एआई? यू आर एक्चुअली डूइंग ऑटोमेशन, राइट। नथिंग एल्स। वो 5-10 पैटर्न्स को एआई का ले लिए हैं, थ्योरेटिकली ट्रेंड कर रहे हैं पीपल को, दैट दे कैन क्रैक द इंटरव्यू। Customer is also, customer, see, think of if you have a banking customer, banking customer is still working in a non-cloud, like a on-prem. करेक्ट। Do हाँ। you think like they will go to a cloud? It's a, yes, they will go, but after the when the this AI will get stability, right? Now it's a very beginning. Now even data science is in a very beginning.
Mm-hmm. It's again, it's my understanding. Okay, because I was there for a 2 year, right? I have Mm-hmm. given a lot of presentation to a customer, right? Customer are coming back and figuring out कि AI में हम क्या क्या कर सकते हैं, like Okay. generic AI, agentic क्या है, what all the Mm-hmm. agents are available, right? अभी आप एक simple agent को search करोगे, थिंक ऑफ लाइक रिटेल बिजनेस के लिए हमने ट्रांसपोर्ट टीएमएस के लिए कुछ एक एजेंट सर्च किया, राइट? इफ यू सर्च फॉर एजेंट, राइट, आई थिंक थाउजेंड ऑफ एजेंट्स विल कम. Which agency, not basically thousand is a big number, but yeah, 100 you will get it a agent, right? हाँ Now, हाँ which agent you will use? Okay, what are the, there are no document also, right? All are the हाँ. small companies which have generated this, right? And agents are a small event in a TM, Correct. like a TMS or anything, right? Mm, Like, okay, they are actually scanning and putting in an inventory, right? Or they are mm, putting in a warehouse. That's a one of the event, right? So it's basically, I say it's a predefined automation tool which they are mm. selling Okay. rather than AI. Apart from a chatbot, right? Chatbot also we have presented, but questions are coming here कि human feeling कहाँ? Correct. Okay. Now you are only playing with the words, right? And Mm, the recorded some data are there based on the right, agent. They are purifying it and sending you a best answer, right? mm, And mm, lastly asking, okay, did you satisfied with my answer, right? So it's a very initial phase. Let's see. And practically saying like technology wise, they have started it. That's it's very good. Okay, but mm, that's a very initial phase. I think what Narayan Murthy has said is right. When AI will really come, ना, ये mm. जो अपना सैकिंग नहीं होगा, हायरिंग होगा. और अच्छा. ऐसा होगा कि लोग सोच नहीं सकते. हाँ आईटी की मैं बात बोल रहा हूँ. ऐसा हाँ. होगा कि आप सोच नहीं सकते हो. So, any advice would you like to give to the people who are planning to join TCS or who have an offer from TCS या freshers को कुछ advice आपकी तरफ से? देखो यार, अगर कुछ नहीं है तो ज्वाइन कर लो, राइट? बट मेरा हाँ. ये कहना है कि अगर आपके पास टाइम है तो दूसरा गाइड ट्राई करो. आई टेल यू व्हाई. व्हेन आई गॉट द ऑफर इन 2000, राइट, in हम्म, my campus interview, TCS was paying me 3.2. अभी भी वो 3.2 3.4 के आसपास right. है, ऑलमोस्ट लाइक 25 साल होने वाले. हम्म, करेक्ट. हम्म, सो आई डोंट थिंक सो सर्विस इंडस्ट्री में कुछ आप कर पाओगे. अगर आपको लग रहा है कि यू नीड टू build your career in IT, right? Either staying India or abroad, right? हम्म, Okay. IT में really करना चाहते हो सीरियसली, हम्म, राइट? अगर सिर्फ नौकरी करना है तो तुम कर सकते हो. बट अगर तुम्हारे पास अंदर से है कि हाँ, मुझे इसमें ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, आई वांट टू बिकम दिस दैट, राइट? देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आई टेल यू. आई नो द पीपल हु हैज विद अ वेरी सिंपल कॉलेज. ओके, मैं हम्म, जब टेक लीड था टीसीएस में, ही आस्क्ड मी, सर गिव मी अ नाइट शिफ्ट. Why? He want to do some kind of trial and error kind of stuff. Today he has one small AI company in the US. Okay, oh, so it all depends. He left TCS in a 1 year itself. He was working in a support under me. Okay, वो एक साल में ही छोड़ दिया, and he is still in connect with me. Okay, okay. and उसके बाद उसने एक प्रोडक्ट कंपनी ज्वाइन की, and he don't like anything. सो मेरा कहना है, देखो, टीसीएस की यूएसपी एक ही थी, जॉब सिक्योरिटी. हाँ. अगर वो नहीं है, देन हम्म, इन माय ओपिनियन, इफ यू आस्क मी, अगर आपका बेटा है आप क्या करो, मैं तो मना कर दूंगा. okay. मैं बोलूंगा तुम 6 महीना और बैठ जाओ बेटा. आई कैन हाँ. फंड यू. ओके, यू लुक हम्म, फॉर, गो बैंगलोर, गो हैदराबाद, लुक फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी. और इफ आई हैव अ बजट, आई विल आस्क हिम टू गो एंड डू एमएस एंड स्टे इन अदर कंट्री, राइट? सो दैट्स व्हाट इट्स ऑल. मेरा ये अपना ओपिनियन. being an IT, being a 25 year in IT industry, I should say this. That's what I say. ठीक है. This is my own opinion again. हाँ. Okay. So thank you for Mr. X coming to our video and explaining all the insights of TCS, like क्या actually हो रहा है, लोगों को क्या करना चाहिए, because बहुत सारे लोगों को लगता था कि हाँ, ये मैं जो एक चीज और बोलूंगा वेरी क्विकली कि whoever is there in a TCS, don't panic. Whatever will happen, it will happen.
But currently, you have an opportunity. You understand that the USP which they have, right? Job security is gone. mm, There is no need of working with a company which actually wiped out their USPs, right? Like a CTS की एक अलग USP है, Infosys की एक अलग USP है, right? So right. जो भी आपकी एक credibility है ना, वो market में आप lose कर गए, right? So it's better if you can start rather than you will wait for things to come. Okay, still I have a job. मैंने मेरा नहीं निकला, आज निकला, आज जो निकले हैं कल और भी निकल सकते हैं. Correct. ठीक है, तो मेरी यही अंडरस्टैंडिंग है कि यू स्टार्ट लुकिंग फॉर इट. करेंटली मार्केट इज नॉट गुड, बट डेफिनेटली मार्केट विल गेट टर्न डाउन. और व्हेन Mm. it will be turned on, you upskill yourself. But for fresher, I will suggest don't join. That's my opinion. So thank you. It was a amazing Yeah. session with you. बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला. तो थैंक यू. इस वीडियो में इतना ही.